पीएडीसी उद्घाटनी उत्सव 5 एकर जमी और 3334 वर्गमीटर विशिष्ट क्षेत्र में पारादीप में नूतन भाव निर्मित पीएडीसी को मिलित भाव में मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक और केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वर्चुअल प्लेटफॉर्म जरिए उद्घाटन करेंगे। सप्ताह के अवसर पर सभी ओडिशा वासियों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अनेक कठिनाइयों के बावजूद हम अपनी परंपराओं का पालन कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान जगन्नाथ हम पर कृपा बनाए रखें और सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएं। भारत के पूर्वी प्रदेश में वृद्धि और विकास की अपार संभावनाएं हैं। माननीय प्रधानमंत्री की पूर्वी भारत के विकास के लिए पूर्वोदय की परिकल्पना से प्रेरित होकर उड़ीसा में कई परियोजनाओं का आरंभ किया गया है। वो दिन दूर नहीं जब उड़ीसा पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा और भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। Sir, today the entire human race is fighting a war against the invisible enemy, the coronavirus or COVID-19. Even during these difficult times, our corona warriors of the oil industry are maintaining uninterrupted supplies across the nation so that the much needed fuels are made available to the people at all times, especially for essential and emergency services. Under the able leadership and guidance of Shri Dharmendra Pradhan Ji, the oil and gas enterprises have successfully implemented several flagship programs of national importance in the last few years. The most significant ones among them are PEHL and Pradhan Mantri Ujjwala Yojana for LPG customers. The PEHL scheme enabled transfer of LPG subsidy directly into the bank accounts of over 27 crore individual consumers. Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, the flagship program of the Government of India, has proved to be the boon to 8 crore or more families below the poverty line, especially women in the country. For a majority of them, switch over from firewood and cow dung to LPG as cooking fuel in the kitchen has been a major healthy lifestyle change. Another big success was the seamless pan-India transition from BS4 grade fuels directly to BS6 fuels before 1st April 2020 deadline. The entire oil sector implemented projects worth 35,000 crores with unwavering focus and coordinated thrust to ensure that the world standard fuels flow from the refineries to the nozzles of the petrol pumps across the country. Even after the coronavirus setback, India today stands as a bright star in the global economic space in terms of GDP growth rates. Underpinned by stable macroeconomic parameters, highly favorable demographic profiles, and mega structural reforms. Though the world is witnessing a slowdown, we expect the economic growth in India to gather momentum. The dynamism and uncertainty associated with the crude oil business has compelled refiners to integrate beyond refining and venture into other sectors such as petrochemicals and alternate energy. Over the years, Indian Oil has also diversified significantly, exploring new businesses, frontiers aimed at overall growth of energy sector in India. Petrochemicals impact practically all the sectors of the economy, be it agriculture, infrastructure, FMCG, personal hygiene, medical applications, packaging, logistics, automobiles, energy, and so on. India's strong growth rate, changing consumer behavior, advancement in material sciences, and upward mobility has driven this strong growth in the segment over the past years. Despite witnessing healthy growth, the penetration level of petrochemical in India is far lower than the global average. India's per capita consumption stands at around 12 kg compared to the global average of around 35 kg, indicating significant headroom for growth. Indian Oil has recently constructed this state-of-art facility for leading research and application in the field of polymer science called Product Applications and Development Center (PADC) at Paradeep. The PADC, apart from being a center for excellence in the field of polymer research, is also likely to play a pivotal role as an incubation center for entrepreneurial development and polymer training platform for the entire industry. The center has 4 laboratories, namely Chemical Lab, Compounding Lab, Processing Lab and Testing Lab. 54 sophisticated processing and testing machines have been installed to offer technical guidance to customers, develop new applications for polymer grades, and to ensure cost-effective formulations. I am also glad to inform this August gathering that PADC Paradeep has been certified and recognized as a DSIR approved laboratory by Ministry of Science and Technology, Government of India. Ladies and gentlemen, Indian Oil is significantly committed to the state of Odisha with nearly 41,000 crores investment in the state over the last 5 years.
Our commitment towards development of petrochemicals and related downstream industry in the state is equally strong. In February 2019, Indian Oil commissioned its 700,000 tons per annum polypropylene plant at Paradip with an investment of over 3,100 crores. Another petrochemical feedstock project of monoethylene glycol or MEG is being constructed with an investment of 5,600 crores and is likely to be commissioned by the year 21-22. Efforts are also on to attract investors to set up polymer processing capacities at the nearby Paradip Plastics Park, being jointly promoted by Indian Oil and ITCO. Establishment of PADC at Paradip would significantly enhance the product quality, promote entrepreneurship and self-reliance in petrochemical and plastic production in the region through foremost utilization of infrastructure and available resources. Indian Oil also recognizes the great potential of textile industry in the state, which is slated to emerge as a production hub for textile raw materials and yarn supply to the neighboring East Indian state as well as exports to Bangladesh. With a view to leverage the existing opportunity, Indian Oil plans to set up an integrated PX-PTA plant with 1200 KTA capacity at Paradip. This plant, along with the aforementioned MEG plant of 357 KTA capacity at Paradip, would be a ready source of feedstock for Indian Oil's upcoming 300 KTA textile yarn manufacturing project at Bhadrak, and can similarly facilitate other textile and polyester projects in the region. Indian Oil's commitment towards the above projects is slated to be around 17,000 crore. We are sure that these investments, along with investments in other downstream sectors, both in textile and polymer, will catalyze economic growth not only in Odisha but in the entire eastern India. With this commitment and confidence in my heart that the land of the rising sun, Odisha, would ensure that India shines brighter on the global arena in various fields. I once again welcome our esteemed dignitaries and guests to this inaugural function. I hope that such projects of national eminence would catapult our country into next generation of advanced research, enabling entrepreneurship and sustainable growth in the days ahead. Thank you very much. Jai Hind. Namaskar. Thank you very much, sir. Now I would request Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Shri Tarun Kapoorji, to address us. Honorable Union Minister for Petroleum, Natural Gas and Steel, Shri Dharmendra Pradhan Ji, Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik Ji, CMD IOC, Shri Sanjeev Singh Ji, senior functionaries from Government of India, Government of Odisha, Indian Oil, esteemed customers, members from the media, ladies and gentlemen. It is my great privilege and honor to address the inaugural ceremony of Product Application and Development Center, Paradip today. The project showcases our promise to make India a leading player in the field of polymer research and support the culture of enterprise and self-reliance in the country. If India has to become a leader, then I think innovation is the key, and this becomes a big step in this direction. The PADC facility is spread over 5 acres of land and houses 4 laboratories. Chemical lab is there, compounding lab is there, processing lab is there, and testing lab is there. And all the labs are supported by sophisticated processing and testing facilities. The end users in this segment are mostly from MSME sector, which forms the backbone for industrial growth and employment generation in the country. The Indian plastic industry has made significant progress since its beginning in 1957. The industry spans the country and hosts more than 2,000 exporters and employs about 4 million people across 30,000 processing units, about 90% of which are in the MSME segment. Indian plastic products are exported to over 150 countries. The plastic sector is related to almost all the sectors in the economy, be it infrastructure, personal hygiene, medical applications, etc. We also see huge scope of growth for plastic industry in the state of Odisha, where the per capita consumption is just 2.5 kg. Last year, Indian Oil Corporation commissioned its first polypropylene plant at Paradip to provide feedstock to downstream polymer industry.
In addition, Indian Oil is also working with Odisha Industrial Infrastructure Development Corporation to develop a 120-acre cluster facilities for polymer processing at nearby Paradeep Plastic Park. Indian Oil is similarly working on development of polyester and textile related cluster in the region by way of setting up of feedstock units like purified terephthalic acid and monoethylene glycol at Paradeep, as well as related downstream condensation polymerization textile unit nearby. The facilities, when commissioned, will catalyze development of textiles and polyester related industry not only in Odisha but the entire region. In the end, I would like to compliment Indian Oil for having achieved completion of the PADC project in a record time, and I am sure that the project will go a long way in supporting the spirit of innovation and enterprise in the country. Thank you very much. Thank you, sir. Now, for participants of this virtual platform, I would request to play a audio visual on Product Application Development Center, Paradeep. मैं कहता हूं, भारत का अगर विकास करना है तो पूर्वी हिंदुस्तान के विकास के बिना भारत विकसित नहीं हो सकता। हिंदुस्तान तब आगे बढ़ेगा जब हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश, हमारा आसाम, हमारा उड़ीसा, ये भूभाग हिंदुस्तान का ये ताकतवर बनना चाहिए। प्रधानमंत्री एही चिंताधारा सह ताल देई एक समृद्ध राष्ट्र गठनर लक्ष्य नहीं इंडियन ऑयल ओडिशा रे अनेक प्रकल्प आरंभ करिसेंती। विगत 5 वर्ष मध्यरे कंपनी ओडिशा रे 41,000 कोटीर निवेश करिसेंती। एही क्रमरे ओडिशार पारादीप ठारे इंडियन ऑयल निजर सबुठु बड़ अत्याधुनिक रिफाइनरी स्थापन सह एक पेट्रोकेमिकल हब मध्य करिसेंती स्थापना। 2019 मसीहा फेब्रुआरी मासरे इंडियन ऑयल पक्षरु पारादीप रिफाइनरी परिसर मध्यरे प्रति वर्ष 7 लाख मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता विशिष्ट एक पॉलीप्रोपिलीन प्लांट आरंभ करा जायछि। एही प्लांट रे उत्पादित हेउथिबा द्रव्यर व्यवहार डाउनस्ट्रीम उद्योग रे हेबो, जेमिति कि सीमेंट पैकेजिंग, सार पैकेजिंग, वस्त्र पैकेजिंग, पर्सनल केयर हाइजीन सामग्री जेमिति कि बेबी डायपर, चिकित्सा क्षेत्र रे आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सूट एवं घर व्यवहार उपयोगी सामग्री इत्यादि। ओडिशा रे पॉलीमर उद्योग को प्रोत्साहन देबा पई इडको और इंडियन ऑयल द्वारा मिलित भावे पारादीप प्लास्टिक पार्क रे एक प्लास्टिक उत्पादन क्लस्टर रो स्थापना करा जाउछि। पूर्व भारतर विकास रे एबे आउ एक अध्याय जोड़ी हेला। इंडियन ऑयल द्वारा 43 कोटी टंका विनियोग रे पारादीप रे एक अत्याधुनिक प्रोडक्ट एप्लिकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर माने पीएडीसी रो स्थापना करा जायछि। एही केंद्र उद्योग मानक पई पॉलीमर रो नुआ नुआ व्यवहार एवं एहार विकास पई काम करिवो। एहा सह पीएडीसी पॉलीमर क्षेत्र रे उपभोक्ता एवं ब्रांड रो मालिक माननकु सहायक हेबो। एही केंद्र द्वारा पॉलीमर क्षेत्र रे निवेशक माननकु आवश्यक उत्पाद एवं प्रक्रिया विषय रे प्रशिक्षण और नुआ प्लांट स्थापना पई उपयुक्त मेशिन सह पदार्थर चयन रे सहायक हेबो। उपभोक्ता और नुआ निवेशक माननकु ध्यान रे रखी एही केंद्र रे आधुनिक एवं उत्कृष्ट परीक्षण और प्रोसेसिंग उपकरण लगा जायछि। पीएडीसी बजार पॉलीप्रोपिलीन प्लांट एवं उपभोक्तांको मध्यरे एक सूत्रधार भावे काम करिवो। उत्पाद गुड़िको अधिकरु अधिक उपयोगी एवं सस्ता बनाइबा पई एही केंद्र उद्योग मानक सह मिसी काम करिवो। पॉलीमर उद्योग क्षेत्र रे एही उत्कृष्ट केंद्रर स्थापना एक माइलस्टोन हेबो। भारत सरकार विज्ञान एवं प्रजुक्ति मंत्रणालय द्वारा पीएडीसी पारादीप को डीएसआईआर स्वीकृत प्रयोगशाला मान्यता 23 डिसेम्बर 2019 रे प्रदान करा जायछि। एही केंद्र रे मोट 4 गोटी प्रयोगशाला अछि। एहा मध्यरे पॉलीमर प्रोसेसिंग प्रयोगशाला जेउठारे सेमी कमर्शियल आकार रे अत्याधुनिक प्लास्टिक प्रोसेसिंग मेशिन लगा जायछि। सहयोग करिबा आज ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक एवं केंद्र पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस एवं इस्पात विभागर मंत्री श्रीजुक्त धर्मेंद्र प्रधान कर कमल रे पीएडीसी रो उद्घाटन हेबाकु जाउछि। Thank you. On this momentous occasion of inauguration of PADC Paradeep, I would now request Honorable Union Minister for Petroleum and Natural Gas and Steel, Shri Dharmendra Pradhan ji,
to guide us and address us. Sir. ओडिशार सम्माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री नवीन पट्टनायक महाशय आज उत्सव मुख्य अतिथि जहां कर कमल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भारत सरकार द्वारा बना जाइथिबा प्रोडक्ट एप्लिकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर पारादीप टी लोकार्पण हब। ए कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा भारत सरकार पेट्रोलियम विभाग सचिव माननीय श्री कपूर जो महानुभवों व्यक्तिगत रुचि और उद्यम रे ओडिशा रे आईओसी एक नुआ कीर्ति स्थापन करि पारिछि। आईओसी रो वर्तमान रो चेयरमैन आदरणीय श्री संजीव सिंह जी, आईओसी रो नवनियुक्त चेयरमैन जी आसंता 1 तारीख ठू दायित्व नेबे माननीय श्री वैद्य। ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म रे दिल्ली, भुवनेश्वर, पारादीप तथा आईओसी रो विभिन्न जगार विभिन्न ऑफिस रे बसिथिबा ओडिशा सरकार भारत सरकार विभिन्न जगार बसिथिबा अधिकारी वृंद मु समस्त को व्यक्तिगत भावे भारत सरकार तरफ कृतज्ञता जनाऊँची। आज ये गरिमामय कार्यक्रम को आयोजित करथिबारु ओडिशार शिल्पायन रे ओडिशार विकास रे उभय केंद्र और राज्य सरकार मिलित उद्यम रे आज जो गोटे उच्च स्तर डेवलपमेंट सेंटर 43 कोटी टंका खर्च होगी बनी पारादीप टी तार लोकार्पण उत्सव ओडिशा सरकार योजना अच्छी पेट्रोकेमिकल स्टील माइन्स एंड कोल एल्यूमिनियम टूरिज्म टेक्सटाइल एग्री एंटरप्रेन्योरशिप तथा अन्य सर्विस इंडस्ट्री को ओडिशा रे तैयारी करके ओडिशा रे रोजगार अधिका सृष्टि करिबा ओडिशार राजस्व बढ़ाइबा ये उद्यम को भारत सरकार पूरा सहयोग दे आसी। जो भले भाव ये उल्लेख करागला इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 40,000 रु अधिका कोटी टंका खर्च कर सारे प्लास्टिक इंडस्ट्री आधुनिक उपकरण बनवा प्लास्टिक आधारित आधुनिक उपकरण बनवा इडको और आईओसीएल रो जॉइंट वेंचर रे गोटे एसपीवी गठन करके पारादीप रे गोटे विश्व स्तरीय प्लास्टिक पार्क निर्माण करा जायछि। भारत सरकार केमिकल और पेट्रोकेमिकल विभाग तरफ सीपेट रो गोटे उच्च स्तर ट्रेनिंग सेंटर भी सेठी गढ़ा जायछि। आज ये डेवलपमेंट सेंटर पार्क तापे अनेक व्यवस्था तापई सस्ता रे कंचा माल उपलब्ध करेबा आईओसी को दायित्व देछि। पारादीप रे तथा ओडिशा रे बालेश्वर हो पारादीप हो किंबा खोर्धार इंडस्ट्रियल अंचल रे हो किंबा ब्रह्मपुर इंडस्ट्रियल अंचल रे हो किंबा ओडिशा रो अन्य को अंचल रे ओडिशा रे जो माने प्लास्टिक उद्योग रे काम करिवे समस्त को निरंतर और सुलभ मूल्य रे रॉ मेटेरियल मिलू यार दायित्व आईओसी नब। सीपेट भुवनेश्वर, सीपेट बालेश्वर, सीपेट पारादीप ये तीनोटी जाक प्लास्टिक इंडस्ट्री रो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग पाई अंतर्जातिक स्तर रो संगठन से माने सहयोगी हेबे। ता सह आज ये जो प्रोडक्ट एप्लिकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर ये ओडिया शिल्पोद्योगी मानकू ओडिया युवक मानकू आत्मनिर्भर हबारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान रे आत्मनिर्भर हबारे गोटे बहुत बड़ा पदक्षेप हब। ओडिशा को एक अग्रणी राज्य भावे ओडिशा को एक प्रगतिशील राज्य भावे ओडिशा को एक व्यवसाय स्वागतकारी राज्य भावे गढ़ी तोलिबार आम समस्तंकर
दायित्व आम समस्तंकर प्रचेष्टा आम समस्त मिसिकी दायित्व को निज निज जगार रही पूरा करिवार आवश्यकता अच्छी से पाई आज मु आउ थरे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को धन्यवाद देवी आपण जो दायित्व गुड़िक या छाड़ी आपण को नबार बाकी अच्छी जो कथा पेटी चेयरमैन श्री सिंह उल्लेख करुले भद्रक टेक्सटाइल रॉ मेटेरियल कारखाना हो जो कारखाना आग जाइकी राज्य सरकार को द्वारा परिकल्पित धामरार मेगा टेक्सटाइल पार्क रे रॉ मेटेरियल पहुंचबो एटिकार युवक मान को रोजगार मिलिबो एटिकार पूर्व भारत आवश्यकता को धामरारू पूरा करा जिवो भारत आवश्यकता को धामरारू पूरा करा जिवो विश्वर आवश्यकता को भी धामरारू पूरा करिवार वैश्विक बाजार संगे जोड़ा जिवो तार दायित्व जहां आपन पाखरे अछि एमईजी पीटीए भद्रक प्लांट तीनोटी जाक प्लांट को आपण पाखा पाखी 25,000 कोटी टंका यार खर्च हम या आपण माने पूरा करिवे समय अनुसार पूरा करिवे आगामी 2-3 वर्ष भीतर पूरा करिवे एटा मोर पूरा विश्वास ओडिशा सरकार तापे सब प्रकार सहयोग जोगेबे एटा मोर माननीय मुख्यमंत्री पाखरे निवेदन ता छाड़ी ऑयल इंडस्ट्री जो सर्वमोट 1,35,000 कोटी टंकार ओडिशा को एक गैस आधारित क्षेत्र में प्रस्तुत करवा ओडिशा को एक तैल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में परिणत करवा पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल आनुषंगिक एंसिलरी क्षेत्र को ओडिशा एक अग्रणी राज्य भाव गढ़ी तोलिबा आज से दृष्टि ये जातीय स्तर और अंतर्जातीय स्तर और डेवलपमेंट सेंटर गोटे बड़ सहायक हम ये पिला माने आसिबे नुआ नुआ विषय संपर्क में जानिबे जानिला परे तांकर नुआ निजस्व एटी कहगला गोटे ये इनक्यूबेशन सेंटर हम ये नुआ व्यवसाय करिवार वातावरण पाइबे लैबोरेटरी को कम पैसा रे उपयोग करिवार सुयोग भी पाइबे ये सब सुविधा गुड़ी को आईओसी आज आम ओडिया पिला मानक पई ओडिया युवक मानक पई उपलब्ध करिथिबारु मु आईओसी को भी धन्यवाद दउची माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाखरे कृतज्ञता ज्ञापन करुची प्रगतिर प्रयोगशाला से जो कथा कहितिले 4 वर्ष तले पारादीप को लोकार्पण कला बेले रिफाइनरी को ये केवल स्लोगान नथिला ये दायित्व थिला परवर्ती अवस्था रे पॉलीप्रोपिलीन कारखाना तैयारी करके आज ये डेवलपमेंट सेंटर को करके इडको रे पार्टनरशिप नहीं की भद्रक रे कारखाना को लगे कि ओडिशा रे आपण दायित्व को पूरा करी आछन आपण मान को धन्यवाद पुनर्बार मु माननीय मुख्यमंत्री को अशेष धन्यवाद जनाऊँगी रथ यात्रा अवसर रे आज तांकर गरिमामय उपस्थिति ओडिशार शिल्पायन रे ओडिशार युवक मानकर आकांक्षा को पूरा करिबारे श्री नरेंद्र मोदी कर दूरदृष्टि संपन्न नीति को ओडिशा रे लागू करबा पई तांकर सदा सर्वदा सहयोग रही आसीची तांको भी मु भारत सरकार के तरफ कृतज्ञता जनाऊँगी आज अवसर रे ओडिशा नागरिक मानकू विशेष करके युवा वर्ग को धन्यवाद जनाऊँगी अभिनंदन जनाऊँगी यार सुयोग नवा पई धन्यवाद वंदे मातरम भारत माता की जय वंदे उत्कल जनम Thank you, sir. Thank you for your motivating words. Now, I would seek permission from the guests, Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik ji, and Honorable Union Minister of Petroleum and Natural Gas, Shri Dharmendra Pradhan ji, for unveiling of plaque of this Paradeep PADC. Chalo. Yes, please. Thank you, sir. थैंक यू फॉर द अनवीलिंग ऑफ फ्लैग। इसके बाद हमने पारादीप में स्थित इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर का एक छोटा सा एक वॉक थ्रू तैयार किया है, कैसा है, क्या वहां पे फैसिलिटीज हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक छोटा सा वॉक थ्रू वहां का दिखाया जाए। Opportunity to welcome the Honorable Chief Minister of Odisha and Honorable Minister of Petroleum and Natural Gas and Minister of Steel
to the state-of-art Product Application and Development Center (PADC) set up in Paradip, Odisha. Product Application and Development Center is engaged in offering technical assistance and various technical supports to the polymer customers and developing new products and applications in the field of polymers. Product Application and Development Center is also providing support to the new entrepreneurs in setting up of downstream units. All the PADC is carrying out various developmental activities which are in sync with the customer needs and can be very much easily adopted by the customers. PADC is having 4 different laboratories: processing lab, testing lab, chemical lab, and the characterization lab. Right now we are going into the processing lab. The processing lab is having various polymer processing equipments of semi-commercial size, which are used to analyze the behavior and performance of the polymers by actually producing the end products. Various polymer grades that are being produced at the PP plant are analyzed through these machines. These are the machines which are being set up at the PADC lab. This is the TQPP, tubular quench polypropylene film plant, which is used in making films for packaging of textiles and food packaging. This is a twin screw compounding line. This compounding line is used to make various formulations, and with the help of this machine, we are carrying out various developmental activities at PADC to support the customers. There are various other machines also at this lab which are engaged in analyzing the behavior of the polymer. This is the injection molding machine, which is used to make articles like household furnitures, food containers, disposable syringes, automotive and industrial components. At PADC, we are making samples as per the various standards for analyzing the mechanical and physical behavior of the polymer grades that are produced at the PP plant. Moving on to the blow molding machine. This is the blow molding machine. Jar, containers and bottles. This type of containers can be made from the blow molding machine, and the size of the containers vary from 10 ml to 250 liters. The containers can be used for packaging of sanitizers, edible oils, liquid hand washes, etc. At PADC, we are also having testing and chemical lab in the other section of the building, which are having very sophisticated and high-end testing equipment for analyzing the performance behavior of the polymers. Thank you for your valuable time. Thank you, PADC Paradip. Now I would request our chief guest of the program, Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik ji, to address us. Honorable Union Minister, Petroleum, Natural Gas and Steel, Shri Dharmendra Pradhan, Secretary Petroleum, Shri Kapoor, Chairman IOCL, Shri Singh, ladies and gentlemen, I am happy to participate in the inauguration of the Project Application and Development Center at Paradip Refinery of the Indian Oil Corporation Limited. This center will not only perform a pivotal role in developing the new materials and innovative applications, but will also provide support to investors in setting up manufacturing units in the plastic and polymer sectors. IOCL is the anchor for the plastic and petrochemicals based industries in Odisha. It should play a proactive role
in providing infrastructure, raw material support, and technology support to entrepreneurs who wish to set up their units in the region. The expansion of the Paradip refinery must take into account the requirement of raw material, feedstock, and building blocks for the development of polymer and petrochemical industry. The IOCL's proposed project in the Bhadrak Textiles Park is also an important step towards developing an ecosystem for technical textiles in Odisha. The implementation of Bhadrak project of IOCL also needs to be expedited. The project application and development center at Paradip can play the role of a catalyst in developing the polymer-based industry in Odisha. It should emerge as one of the centers of excellence in the field of polymer applications. I wish the center all success. Bande Utkal Janani. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for your guiding words. देश के पूर्वोत्तर भारत में दूसरे इस तरह के पीएडीसी के इनॉग्रेशन के लिए हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री एसएम वैद्य, डायरेक्टर रिफाइनरीज इंडियन ऑयल से, वो अपना फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें सर। श्री वैद्य। It is my proud privilege to propose a very hearty vote of thanks. First and foremost, I thank the Honorable Union Minister Shri Dharmendra Pradhan Ji, Honorable Chief Minister of Orissa Shri Naveen Patnaik Ji, Secretary MOPNG Shri Tarun Kapoor Ji, Chairman Indian Oil Shri Sanjeev Singh, my colleagues from Indian Oil and senior officials from the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, and distinguished invitees joining us through the digital platform. At the outset, I express my gratitude to the Honorable Union Minister and to the Honorable Chief Minister of Orissa for inaugurating the state-of-art Product Application and Development Center at Paradip. It was on 7 February 2016 that Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji dedicated Paradip Refinery in the service of the nation. He had announced that Paradip will now become the Vikas Dweep, the island of development for the people of Odisha. The commissioning of polypropylene unit strengthened that commitment of Indian Oil to energize the industrial growth in the region. Along with the PP unit, other petrochemical projects are also being set up at Paradip that will create a petrochemical hub in the region and support plastic processing industry. The Product Application and Development Center at Paradip aims to emerge as the leading center of excellence in the field of polymer applications in India. I express my gratitude to Shri Naveen Patnaik ji, who has been a pillar of great support for Paradip Refinery and the development endeavors of Indian Oil in the state. I am grateful for your august presence and inspiring words today. I assure you that Indian Oil remains committed to the growth agenda of Odisha in the times to come. I express my gratitude to Shri Dharmendra Pradhan ji, who is steering the mission of energizing the nation. We will continue to seek your guidance and support in all our future activities as we move forward ahead to fulfill the energy vision of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for the nation. I also take this opportunity to thank Shri Tarun Kapoor, Secretary MOPNG, for his rich insights and support to Indian Oil at all times in helping us achieve our targets. My sincere gratitude to Sanjeev Singh ji, Chairman Indian Oil, for the constant guidance to the teams for creating the modern Product Application and Development Center at Paradip. For Indian Oil, the future holds a promise of many greater triumphs, those that will take us closer to our aspirations of becoming a globally admired energy company. Once again, my heartfelt thanks to all the distinguished guests for their gracious presence at this digital inauguration ceremony and making it a memorable occasion. Jai Hind. थैंक यू वेरी मच सर। और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग थ्रू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच।
देखुले पीएडीसी उद्घाटनी कार्यक्रम सीधा प्रसारण जो मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक और केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान वर्चुआल प्लाटफर्म रे उपस्थित थिले से भली अनेक वरिष्ठ अधिकारी माने मध्य एही अवसर रे उपस्थित थिले। पारादीप रे इंडियन ऑयल रो प्रोडक्ट एप्लिकेशन और डेभलप सेंटर बा पीएडीसी रो उद्घाटनी उत्सव सीधासलख चित्र आपण देखुथिले। एथिरे 5 एकर जमी और 3334 वर्गमीटर विशिष्ट क्षेत्र में पारादीप रे नूतन भाव निर्मित पीएडीसी को मिलित भाव में आज मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक और केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान वर्चुआल प्लाटफर्म जरिया उद्घाटन करिसेंती। 43 कोटीर प्रकल्प फल पॉलीमर शिल्प विकास को प्रोत्साहन मिलिबो। केन्द्र सरकार को आत्मनिर्भर भारत योजना परिप्रेक्षी में पीएडीसी पारादीप विकास और पॉलीमर आमदानी को ह्रास करिबारे विकल्प भाव में सहायक हेबो बोली आशा करा जाउछि।